Hello students, welcome to my channel, my English Chamber. Today we will discuss certain questions. आज आम कि गोटे क्वेश्चन डिस्कसन करवा एसे टू एग्जामिनेशन जस्ट अल्प किस दिन अच्छी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो क्वेश्चन परीक्षा पढ़ार बहुत चांस अच्छी तापर आम आज डिस्कसन करवा. हियर यू विल फाइंड 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रोज, पोएम, नॉन डिटेल एंड आल्सो ग्रामर. Let's know their answers. Without wasting your valuable time, let me discuss these questions. Question number 1. The Bhopal gas disaster occurred at Bhopal on dash. The Bhopal gas disaster occurred at Bhopal. ता माने एटा भोपाल रे घटितला ना, ए जो भोपाल रे घटितला भोपाल गैस डिजास्टर ऑन डैश को तारीख रे घटितला को मसिया रे को मास रे. करेक्ट आंसर बी 3rd December 1984. Clear? Let's move to question number 2. Usually an average adult consumes dash kg of the food. I am not talking about water, I am not talking about air, I am talking about what? Food. So as far as food is concerned, 1.5 kg of the food. Clear? If you say air, 15 kg of air and 2.5 kg of water, but 1.5 kg of food. That's the correct answer. Clear? Let's move to question number 3. Trees have been killed by pollution from dash. Trees have been killed by pollution from dash. The exact answer is power plants. Exact answer is power plants. If we talk about car exhaust gases, these gases are responsible for killing or destroying flowers and vegetables. If you talk about smelters, it is responsible for poisoning the cattle. So here the exact answer is option number A. Question number 4. The meanness of air pollution attributed to the dash has now reached the peak level, the top level. The answer will be automobile exhaust. That means because of automobile exhaust, the meanness of air pollution has now reached the peak level or the top level. Clear? Question number 5. In dash, that means in dash country, the beautiful old buildings of Krakow are slowly being destroyed. That is in passive. Beaver being V3. Beaver being V3. जदि एमती तुम्हें पाइब ताले पिले सब्जेक्ट रे तुम्हें कौन देकी पड़िबो को देकी पड़िबो. दैट इज इन पैसिव फॉर्मेट. ठीक अछि. अच्छा, in dash the beautiful old buildings of Krakow are slowly being destroyed by acidic smog. Smoke plus fog. That is called what? Smog. In which country? Yes, 4 options are here. Exact answer is Poland. Option number C. Clear? Question number 6. Dash in life is not easily secured. Answer will be success in life. Why? Because success is noun. Answer here will be B. Success noun. Succeed verb. Successful adjective. Trade is also noun, but it is not appropriate here. Clear? So what will be the answer? Success. Why? Success in life, that is in subject position, so a noun will be placed. Clear? Then is the verb. So success in life is not easily secured. Question number 7. Smoking in your youth dash the body. Smoking in your youth dash the body. What will be the answer? Stunts the body. That is third person singular. That is the subject and third person singular number. So verb, then S or yes. The exact answer will be C. That means stunts the body, not stunt the body or clouds the body or stab the body. Clear? See, question number 8. Drink is the deadly enemy of a dash. Health? Yes. Efficiency? Yes. Mind? Health and efficiency? Yes. That's the exact answer. So the exact answer will be C. This question is from School's Goodbye.
Question number 9. One should avoid dash in every form. One should avoid dash in every form. What's the exact answer? Gambling. Yes, you are exactly right. Gambling should be avoided in every form. Question number 10. In your leisure hours, that means when you will get relaxed time, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ leisure ସମୟ ପାଉଛ, avoid mere dash. କ'ଣ avoid କରିବ? Smoking, book reading, drinking, idling. Here, Lord S.S. Percy wants to say to us that we should avoid mere idling. Option number D is the exact answer. Clear? Let's move to question number 11. Question is, the boy with dash, I am living, is a good cook. The boy with dash, I am living, is a good cook. The answer will be what? With whom? The boy with whom I am living is a good cook. Let's know its main clause. The boy is a good cook. Pile eita hochi tar main clause. Subordinate clause kouta? With whom I am living. Jaha sangare mu basa koruchi. That is subordinate clause and it is also RC. But it is called what? MC. Clear? Let's move to question number 12. Question is, the problem is who will bail the cat? The problem is who will bail the cat? How many clauses are there? There are 2 clauses. Here the instruction is whether the underlined clause is subject, complement, object or apposition. Let's know what is the position, what is the function of this subordinate clause. चलो जानिबा पिले ए subordinate clause रो function टा कोन. If you think it is noun clause, जदि तुमे भाबुछ एटा सर noun clause बोली, just put the question word what. The problem is, problem टा कोन? The problem is what? Problem टा कोन? ना problem टा होची who will bail the cat. हां छिड़ी जाउची. Answer पाई पारुछे. If we put the question word what, we will get this answer. Who will bail the cat? ओडिया रे पचारना निजको समस्याटा कोन? समस्याटा कोन? ना who will bail the cat. एबे आंसर पाई पाछे. That's why this subordinate clause is called noun clause. Here the instruction is what is the function of the noun clause. Noun clause रो function टा कोन? पिले जदि तुमे बी वर्ब टाकू मेन वर्ब हिसाब रे गोटे सेंटेंस रे देखुछ, एटी बी वर्ब अछि, गोटे मात्र वर्ब, तेनु एटा एटी हे गला कोन? ना मेन वर्ब. ताहाले पिले जदि तापरे नाउन क्लॉज टी थाए, दैट नाउन क्लॉज can't be omitted. से नाउन क्लॉज टाकू आमे काढी परिबा नाही. व्हाट पकी उत्तर आसिले मध्य सेटाकू आमे काटी परिबा नाही. That noun clause is called what? Complement. What is complement? A word or a phrase or a clause which makes the meaning of the sentence complete. जोटा sentence रो meaning टाकू complete करची. मु कहबी गोटे एग्जांपल दउचे देखो. I am a teacher. एटी पिले फ्रेज टा होची a teacher. A teacher टा काटी दियो. I am. What is I am? I am कौन? मु कौन? मु तो किसी कहलिनी a teacher, a doctor किसी कहलिनी. That's why a teacher is an essential part. This phrase is called complement. A phrase टाको हमें complement कहबा. Again, look at here. Am is the be verb. Am टा होची be verb and it is the main verb. एटा गोटी मात्र verb सेटा. Am टा होची गोटी मात्र verb अछि. Main verb हो गेला. That's why after that be verb, this phrase is called what? Complement. Similarly, जेमती ए टीचर टाको complement कहले बी वर्ब पर अछि, ठीक से बढ़िया एठी ए क्लॉज टा कहा पर अछि ना बी वर्ब पर अछि. आ बी वर्ब टा होछि एठी मेन वर्ब. सो who will bail the cat is called what? सेटा को हम कहउछे complement. So this option is right. That means the function of this noun clause is complement. Now let's move to question number 13. Well, which among the following has a noun clause? एमान भितरे को सेंटेंस रे नाउन क्लॉज रहित के देखिबा आमे. All that glitters टा पिले हैला रिलेटिव क्लॉज. I met him
as I was leaving the house means when I was leaving the house. This subordinate clause is called adverb clause. My uncle who is a judge is called relative clause. Option D को देखिबा. What is our fate cannot be avoided. Dear students, this is called subordinate clause and this subordinate clause is called noun clause. Why? Put the question word what. What cannot be avoided. कोटाकू avoid करि परिबा नाही ना what is our fate जोटा आमर भाग्य बुझी पाछन नहीं ताले what पकेले आंसर टी आसुची what is our fate that's why it is called noun clause. If you ask what is its function ता माने noun clause रा फंक्शन टा कोन पिले एठी noun clause रा फंक्शन टा होची सब्जेक्ट काहे की सब्जेक्ट ता माने एटा काहे की सब्जेक्ट रा काम करूची ना आफ्टर सब्जेक्ट you know verbal group is placed here you can find the verbal group that's why it is called subject. So the function of this noun clause eta the noun clause यार function टा होची कोन ना subject. Clear? Now let's move to question number 14. एटी क्वेश्चन टा देखो the only question dash surprised me is worth discussing. ताले पिले आको चिंता करियो सबऑर्डिनेट क्लॉज टा कोउठ रहइबो आउ मेन क्लॉज टा किए the only question is worth discussing that is called main clause. ताले कथा होची dash surprised me एटा आसीबो सबऑर्डिनेट क्लॉज ए जो which who whom that एटा सब कोउथरे बसे रिलेटिव क्लॉज ता माने एटा निश्चित रूप रिलेटिव क्लॉज हेइथिबो. क्लियर? अच्छा बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन you know antecedent is placed ताले एटा होची कोन ना antecedent भला भाबरे बुझ पिले न बुझी पारिले पचारिबो the only question टा हम कहउचे antecedent. अच्छा तुमे सूत्र जानिछो if you find only last next like these जदि तुमे एभलिया वर्ड गुडा पाउछ in antecedent रे then that will be placed as relative pronoun that टाकू relative pronoun हिसाब रे प्लेस करा जिवो. क्लियर पढै छी. अच्छा let's move to question number 15. Since no one asked me I did not tell them. Since means आज जेहेतु मते केही पचारिले नाही I did not tell them मु सेमान को कहली नाही मु सेमान को काहे कहली नाही ता रीजन टा होची मते केही पचारिले नाही. So it is called adverb clause of reason. Option number B is the correct answer. Clear? Let's talk about question number 16. If I dash two wings I would fly in the sky. I would fly in the sky is called main clause. It is called subordinate clause and it is also called adverb clause and it is called conditional clause. Why? Because here you can find a condition. तमे काहे के एटा कंडीशनल क्लॉज बोली कहबो कारण एटी कंजक्शन लागिछि इफ लागिछि नाही गोटे कंडीशन शो करछि जदि मोर दुईटी डेणा थांता मनीषर केबे डेणा हलानी जदि से कहउछि जदि मोर दुईटी डेणा थांता ता माने पिले एटा इमेजिनरी कंडीशन की कंडीशन एटा इमेजिनरी कंडीशन एंड यू नो माय डियर स्टूडेंट्स तमे जानि त भलो भाबरे जे इफ you found such type of questions like if I dash two wings I would fly in the sky, that means in the case of imaginary condition we should use had. If I had two wings jadi moro duiti dena thanta you can't means you cannot place where. How can you use where to केबिति व्यवहार करि परिबा. If I were a king जदि मु राजा हेइ थांती मु राजा नुहे मु भिकारी किंतु मु कहउछि मु जदि राजा हेइ थांती you would be my minister तुमे मोर मिनिस्टर रही थांत कि इमेजिनेशन नहीं भाबिबा कोन पैसा पड़छि भाबिलो अमेरिका जाई के आसे केते टंका लागिवो किछि लागिबनी भाबिबा भाई कोन पैसा पड़िबो बिल्कुल पड़िबनी. So that is all about question number 16. Now let's move to question number 17. Question is when did he write the poem. Subject is he. Which one is the subject? Subject is he. तमे मते क्वेश्चन करिवो सर सब्जेक्ट टा केमिति ही हबो पिले भलो भाबरे बुझो. WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस रे ऑक्सिलियरी आउ मेन वर्ब मझिरे जो नाउन फ्रेज टी रहिबो
सेटा यूजुअली सब्जेक्ट होई थाए क्लियर अच्छा ताहले एटा जदि ही जदि सब्जेक्ट हला ताहले द पोएम टा कोन पिले द पोएम हे गला कोन ना ऑब्जेक्ट से कहला वॉइस चेंज करिया माने एटा ता माने एक्टिव अछि सब्जेक्ट एटी डुअर सब्जेक्ट आउची डुअर सब्जेक्ट डुअर माने सब्जेक्ट एक्टिव अछि सब्जेक्ट एक्टिव अछि माने सेंटेंस एक्टिव अछि ता माने मु करिवि कोन ना पैसिव करिवि अच्छा पैसिव कले कोन करिबा यू शुड यूज ऑब्जेक्ट इन द सब्जेक्ट पोजीशन एक्टिव रो जे ऑब्जेक्ट ताकू नबा सब्जेक्ट पोजीशन को ताले चारटा ऑप्शन अछि कोठी सब्जेक्ट पोजीशन अछि चिंता करिबा अच्छा एटी तो वर्ब दुईटी मझिरे बसी ये सब्जेक्ट वर्ब दुईटा मझिरे बसी ये होछ सब्जेक्ट एठी वर्ब दुईटा देन नाउन फ्रेज देन वर्ब तेनु एटा सब्जेक्ट पोजीशन ग्रामेटिकली एरर हां ग्रामेटिकल एरर एठी रहिछि एटी दुईटा वर्ब मझिरे बसी एटा हला सब्जेक्ट किंतु ग्रामेटिकल एरर एटा रहिछि ताले ए दुईटा भितर कोडा आसीबो when was the poem written when did the poem written एटार भी ग्रामेटिकल एरर रहिछि ताले मु काहे कि एटा ग्रामेटिकली राइट बोले कहउछि ठीक भल भाबरे बुझिबा मु कहली ऑब्जेक्ट ता नबो सब्जेक्ट पोजीशन नै जा द पोएम डिड राइट ता माने पास्ट नै कि ता माने वाज और ओआर देन v3 रे की आसीबो रिटेन ताले वाज द पोएम रिटेन आंसर आसला कोन वाज द पोएम रिटन WH वाटा के से व्हेन ताले लिखि मु कोन ना व्हेन वाज द पोएम रिटन व्हेन वाज द पोएम रिटन क्वेश्चन मार्क दैट्स द करेक्ट आंसर सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट व्हेन वाज द पोएम रिटन क्लियर लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 पिला 18 नंबर क्वेश्चन कोन कहउची इफ क्लॉज रे कौन रही देख हार्ड प्लस v3 नहीं इफ क्लॉज रे हार्ड अच्छी आउ v3 अच्छी मेन क्लॉज रे कौन कहूँ मेन क्लॉज रे हाव इंस्ट्रक्शन अच्छी तुम्हें जानी पिले इफ क्लॉज रे हार्ड प्लस v3 थिले मेन क्लॉज रे कौन करिबा वुड और कुड और माइट प्लस हाव प्लस v3 ताले हमें वुड टा लगेबा हाँ लिखिबा एटी आंसर वुड तापरे हाफ बसैबा वुड हाफ एटी हाफ रो v3 फॉर्मेट कोन आसीबो हार्ड ताले वुड हाव हार्ड विल बी द आंसर इफ ही हार्ड नॉट स्पेंड मच मनी जदी से अधिक टंका खर्च करी नथांता ही वुड हाव हार्ड ए लॉट ऑफ बैंक बैलेंस ता पाखरे बहुत बैंक बैलेंस थांता अतीतर कथा ए प्रकार कंडीशनल क्लॉज को हमें कहू कोन ना ऑन रियल कंडीशन of what past अतीतर अनरियल कंडीशन कथा हम एटा कहू क्लियर ताहले तार को ऑप्शन टी आसीबो देखिबा would have heard this option is correct let's move to question number 19 I said to my friend let's go for a walk my dear students if you find late that means suggestion is there so this answer will be appropriate why because here you will find the word suggest I suggested my friend said to will be omitted instead of said to suggested will be placed I suggested my friend clear then that then you should use should तापर कौन यूज करिबा should verb बसैबा here let's means let us एटी us लिखा आइछि लेट्स मीन्स लेट अस पिले मने रख जदि इन्वर्टेड कमा भितरे आई मी वी रहुची ता माने बा अस रहुची ता माने से कहा को बुझौची ना प्रथम रे जो व्यक्ति लिखा जाइछि जदि आई लिखा आइछि ताको बुझौची राम लिखा आइछि ता माने ताको बुझौची सीता लिखा आइछि तो ताको बुझौची ताले एठी अस बदल रे हमें कोन लिखिबा वी आसीगला कना मु कहली ना तो मु कहबी जे सेमान जेबे कना मु ता भीतर अछि तनो वी सजेस्ट वर्ड पई हमें शुड यूज करबा तापरे गो वर्ब टी आसीबो काइना मोडाल पर तो सब बेले बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बसे गो तापरे फॉर ए वॉक दिस आंसर इज एप्रोप्रिएट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20 द टीचर सेड
इन्वर्टेड कॉमा भितर कौन अच्छी इंडिया गॉट हर इंडिपेंडेंस इन 1947 इट इज हिस्ट्री रूल सेज रूल कहूँ जे हिस्ट्री पाई नो चेंज रूल कौटी चेंज है देखा एटी पास्ट टेंस अच्छी बा पास्ट सिंपल अच्छी एटा पास्ट परफेक्ट कर दि जाए सूत्र पड़ी तेणु ये हेनी गला कटिगला एटी सेम अच्छी गट को गट अच्छी पास्ट टेंस अच्छी किंतु एटा हेनी पचर कहीं हेनी टीचर सेड टू लेखा जाए ना कि कौन सी ऑब्जेक्ट बसी ना कि नाउन फ्रेज बसी ना ताले टोल्ड केमती लिखिदेवा जदि टोल्ड लिखा ये ऑब्जेक्ट लिखा पड़ो लिखा है नहीं तेणु यहाँ भी हम ना द टीचर सेड दैट इंडिया गॉट हर इंडिपेंडेंस हाँ ये गॉट को गॉट रही हिस्ट्री सेम रो चेंज ये ठीक अच्छी एपटे रिपोर्टिंग भर भी ठीक अच्छी राइट रिपोर्टिंग क्लॉज रा रिपोर्टिंग भर से रिपोर्टिंग भरटा आम इंडिया स्पीच रेटी लिखले सेट को सेट टेंसटा सेया रहा ये सजेस्ट तो बसबनी तेणु यहाँ भूल अच्छी सी ऑप्शन इज एप्रोप्रिएट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21 जस्टिफाई नाउन फॉर्म जस्टिफिकेशन ए बॉडी ऑफ लॉज इज कॉल्ड डैश ए बॉडी ऑफ लॉज इज कॉल्ड लेजिस्लेशन दिस आंसर इज करेक्ट फ्रॉम एयर पोल्यूशन चैप्टर आई नेवर लाइक टू टेक ए डैश एग पीपी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करिबा बॉइल्ड एग नॉट बॉइलिंग बॉइलिंग माने सिझुतिबा बोली दो सिझा अंडा सो बॉइल्ड एग V3 फॉर्मेट यूज्ड एज एडजेक्टिव एटा एडजेक्टिव रो काम करूची इट इज मॉडिफाइंग द वर्ड एग फॉरेन प्लस एक्सचेंज FOREX for plus X that is called forex this answer is correct forex now let's move to question number 25 a person who studies weather conditions is called dash meteorologist not meteorologists why because a person so meteorologist spelling error so this answer is appropriate TEOROLOGIST triple O question number 26 gradually weaken is the verb gradually weaken single word sharp is the appropriate answer school's goodbye chapter dash he is leaving school he will not forget his school days से स्कूल दिन गुड़िक भूलिब नहीं जदियो से स्कूलटा छाड़ीदेव ताले ऑल्दो जदियो से स्कूलटा छाड़ुची बा छाड़ीदेव he will not forget से ताकू भूलिब ना स्कूल दिन गुड़िक भूलिब नहीं the answer will be although and this subordinate clause is called adverb clause of what adverb clause of a concession now let's move to question number 28 occupying OCCUPYING this answer is appropriate now let's move to question number 29 dash of the polluted air can lead to respiratory disorders dash of the polluted air can lead to that is verbal group so dash of the polluted air that is subject so inhale is the verb inhaler is the noun inhalation is the noun so noun form will be appropriate is the thing but inhalation of the polluted air can lead to respiratory disorders so this answer is appropriate Ashok who is my classmate that is subordinate clause and who is my classmate is qualifying the word this noun phrase Ashok so this noun phrase is called antecedent that's why who is my classmate is called relative clause it starts with a relative pronoun and the word who is the relative pronoun who is my classmate is called relative clause okay so which type of relative clause my dear students this relative clause gives us extra information ये आमको एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दौची दैट्स व्हाई देयर आर टू कमाज सेतवें दीटा कमा रही देखो एठी गोटे कमा अछि so it is called non defining relative clause so this subordinate clause this relative clause is called non defining relative clause now let's move to question number 31 they are calling the girl the fairy folk C is the appropriate answer the fairy folk are calling the girl
Question number 32. Where are the bridal cakes? Bridal cakes टा कोठी? According to the mother, मार कहवा अनुजाई on the hearth, चुलारे. Question number 33. Who does the daughter want to grieve? कहा को दुख देवा को चाहूची? Mother, husband, lover, fairy folk. The lover. Poem name, village song. Question number 34. Who came walking without crutches? Old man, old man's father, old man's grandfather, traveler. This answer is appropriate. The old man's grandfather. बुढ़ार बापा आसते गोटे क्रचेस रे. ओल्ड मैन निजे बुढ़ा निजे आसीथिले दुईटी क्रचेस रे. बट द ओल्ड मैन्स ग्रैंडफादर विथ नो क्रचेस. क्लियर. नंबर 35. अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन्स ग्रैंडफादर जेजाबां कहवा अनुजाई डैश वाज द ओनली थिंग men called their own labor. Question number 36. Who turned the grain? Who turned the grain about in his hand? The old man's grandfather. Question number 37. When the grain was laying on a dash, ଯେତେବେଳେ grain ଟା ପଡ଼ିଥିଲା କୋଉଠି? A hen flew in and pecked at it. କୋଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା? Window sill. Clear. 38. Who said? किए कहिला money does not grow on trees? Juman. Right? Who said? Juman. Not Olgu, not Karima, not Samju Sao. Juman. To whom? To his aunt. Question number 39. Who was the पंच in property related case? Property related case रे किए पंच थिला? नहीं. Property related case रे किए पंच थिला. ताले प्रथम चिंता कर प्रॉपर्टी रिलेटेड केसटा मैटरटा इश्यूटा कहा भितर थिला? कहा भितर? जुमान आउ तार आंटी भितर. नहीं. हु वाज द पंच एट दैट टाइम? अलगू वाज द पंच एट दैट टाइम. क्वेश्चन नंबर 40. अकॉर्डिंग टू जुमान द बुलक्स डेथ वाज द पनिशमेंट फॉर अलगूस डैश. अलगूस डिसिप्शन. दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ whom? ऑफ जुमान. Question number 41. Samju Sao would return from the town. से टाउन रु फेरी आसुथिला with a lot of dash. कौन नहीं क्या आसुथिला? सो नहीं क्या आसुथिला? सो salt and oil. बिकिया को कौन नहीं के जाउथिला? GS घी एंड सुगर. घी सुगर नहीं के जाउथिला. salt and oil नहीं के आसुथिला. मन रखितो GS नहीं के जाउथिला. सो नहीं के आसुथिला. Question number 42. The bullock died because dash. Whether there was a heavy load on it, heavy load जो मरीगला ना 4 trip जो मला, or it was driven toward, or it was driven toward without feeding it. ना ताकू जोरे चले जाउथिला ता द्वारा परिश्रम करा जाउथिला without feeding it. ताकू खाया पिया को न दिया जाई. This answer is the appropriate answer. Question number 43. Who suspected that Juman had poisoned the bullock? की संदेह कला जे जुमान विष दे दिथिला बोली काकू? बुलक को. किए संदेह करछि? अलगू. कहीं ना सेटा कहार बलद थिला? अलगूर. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 44. Within dash the bullock became a mere bag of skin and bones. जिन्न सिन्न कंकाळ केते दिन भीतर हे गला? Within a month. A is the appropriate answer. Number 45. How much was the price of the bullock? Bullock ro price केते थिला? 150 rupees. B is the exact answer. Number 46. Who became the first Asian to win the Nobel Prize for Literature? Rabindranath Tagore. Clear? Who became the first Asian to win the Nobel Prize for Literature? Rabindranath Tagore. Question number 47. Vicky's love for his dash was truly insane. Insane means excessive. Vicky रा भल पाइबा काहा प्रति excessive थिला? Option A Lorraine, option B grandmother, option C grandparents, option D parents. Obviously parents. Option D is the exact answer. Question number 48. How do the flower children do their lessons? With closing doors under the soil. Clear? With closing doors means under the soil. Question number 49. According to Tagore, the flower children need dash. According to Tagore, the flower children need dash of their mother.
ତାଙ୍କ ମାମାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଦରକାର କରୁଥିଲେ ନା ଦ ୱାର୍ମଥ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍। କ୍ଲିୟର? ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ WHO World Health Organization has identified dash major risk factors of road injuries. 5 major risk factors of road injuries. These are all about the answers of the selected questions. I hope it will help you much. If you have any doubt, you can contact me at this number. If you understand what was taught today, like, share and subscribe. Never forget it.